हाय। इस वीडियो में हम कवर करेंगे द न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच। ओके, सो वाइल ब्रॉडनिंग द रोल एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रॉबर्ट एंड जैनेट दहार्ड have propounded a conceptual construct that is Christian as the new public service. Okay, it is based on the Calder principle of democratic citizenship, increase the role of community and civil society institutions, organizational humanism, and discourage the theory. Okay, so it is urged by the proponent of proponent of this approach that is primary role of the public servant. Okay, so it is mainly related to the public servant. So the main role and primary role of the public servant is to help citizen, okay, to express and achieve their share interest rather than to control and steer, okay, society. So the new public service movement, okay, that is observed by the Denhard, though not characterized by concrete or rigid principle. Okay, so often certain lessons that may appear to be mutually reinforced. A few perspective lesson from this approach may be summarized as follow. Okay, तो ये जो न्यू पब्लिक सर्विस मूवमेंट है जो कि मेनली ऑब्जर्व किया गया था बाय द देनहार्ड। ओके, उन्होंने क्या क्या मेन ऑब्जर्व किया ओके फ्रॉम दिस मूवमेंट दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस हियर। लेट्स सी। So first one is the philosophy of the governance system should be serve rather than steer. Okay, and second, public's interest should be treated as the aim and not the byproduct of the governance system. Administrators should think strategically, act democratically. Beneficiaries of the government initiative should be treated as citizen and not the customer. Okay. Then fifth one, accountability of public servant should be primarily toward statutory, okay, and constitutional law, community value, political norms, professional standard, and citizen interest. Okay, then sixth one, an ideal governance system should be value people and not just productivity. Seventh, the citizen oriented public service should be value about the strategies of entrepreneurship. So these all are the main observation of the then heart, okay, in the new public service movement. तो क्या क्या था? पहला तो गवर्नेंस सिस्टम को लोगों की सेवा करना चाहिए। ओके, देन उनको अच्छे से ट्रीटमेंट करना चाहिए, किनको? पब्लिक इंटरेस्ट को। ओके, बाय मतलब जो सिविल सर्वेंट होते उनको मेनली गवर्नमेंट जो पब्लिक इंटरेस्ट है, ओके, उनके साथ मतलब पब्लिक लोग के साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। उनकी जो भी उनका इंटरेस्ट है, जो भी उनकी विश है, ओके, जो भी है उनकी हेल्प करना चाहिए मेनली। देन एडमिनिस्ट्रेटर शुड थिंक स्ट्रेटेजिकली देखना चाहिए, डेमोक्रेटिकली देखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर को। ओके, सॉरी। बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव शुड बी ट्रीटेड एज सिटीजन। जो बेनिफिशियरीज जो होंगे गवर्नमेंट के, ओके, जो बेनिफिशियरी दे रहे मेनली, तो गवर्नमेंट शुड इनिशिएट मतलब जो बेनिफिशियरी जो मिलेंगी, ठीक है, सिटीजन को, उनको एज अ सिटीजन देखना चाहिए, ऐसे नहीं कि एज अ कस्टमर। ओके, मतलब ये कि जैसे गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लेके आ रही फॉर द गिविंग एनीथिंग टू द सिटीजन, सो at that time whoever the government servant that will provided or that have the duty and responsibility to provide all that thing, okay, that time that government servant should behave like, okay, as a government servant, and the person to whom this service will be provided, that person, okay, will be treated as a citizen not as a customer, okay, by that government servant. So अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट शुड बी प्राइमरी टूवर्ड द स्टैट्यूटरी। जो नियम कानून में है, ओके, उसके हिसाब से उसको प्रॉपर बिहेव करना चाहिए। ओके, एंड ही हैव टू फॉलो ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कम्युनिटी वैल्यू, पॉलिटिकल नॉर्म्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। ओके, सो द आइडियल गवर्नेंस सिस्टम शुड बी वैल्यू पीपल, लोगों की वैल्यू रखना चाहिए, not only the productivity. So governance system should be take interest on the people's value, not on the productivity of the nation. Okay, so and the government system or the public service should be citizen oriented, not the entrepreneurship, business नहीं करना है, लोगों की सेवा करना है। The concern of the public service movement reflect the time honor precept of the classical political philosophy as well. Okay, reinterpreted by Dwight Waldo in his eminent work, that is the
the administrative state in पॉलिटिक्स एंड विजन बाय द सेल्डम वॉलिन। ठीक है, तो इन्होंने ये दो स्कॉलर ने भी इसको मेंशन किया है। सो ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिस्ट सच एज वॉरेन डेनिन and most intellectual leader of the new public administration movement represent the philosophy that view administration in its context of its original meaning, that is the to serve, okay, सेवा करना है। A question arises, how has comparative public administration engaged itself with the new public service movement? So, if we look at the preamble of the UN Charter, the UN Declaration of Human Rights, the Constitution of the various nations, and the election manifesto of important political parties across the world, where there is a visible emphasis in them. Okay, so there is a visible emphasis in them इन द ह्यूमनिस्टिक साइड ऑफ द गवर्नेंस पॉलिसी। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं मेनली ये हमें अलग अलग जगह पे देखने को मिलती है। ओके, यूएन की जो चार्टर है उसके अंदर देखने को मिलता है, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलता है, अलग अलग देशों में, अपने देश में भी इंडिया के अंदर के प्रेम्बल या कॉन्स्टिट्यूशंस में भी हमें ओके ये सब चीज़ें मेनली ये जो बताई गई है इस मूवमेंट के थ्रू ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है अलग अलग जगह पे। ओके, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी मैनिफेस्टो होते हैं उसके अंदर भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। सो अकॉर्डिंग टू द पब्लिक सर्वेंट अक्रॉस द वर्ल्ड आर कंसिडर एज अ रेस्पॉन्सिबल कैटलिस्ट टू converting lofty notion of public service into the practical reality. So obviously citizen in most nations look to the public servant as a prime mover of collectives happiness of the people. So currently attainment of the goal of cross domestic happiness is gaining acceptance along the customary goals of enhancing cross national product in many countries. So it may be interested to note that there is a internationally accepted world happiness index that places various nations okay on the scale of the happiness of their respective citizens. This approach places great responsibility on the public administration to the humanistic and welfare centric. Okay, so this philosophy has provided a fresh vision to the applied discipline of comparative public administration. So this is all about the new public vision, okay, mainly the new public service approach. Okay, and this new public service approach is come through this movement, that is the new public service movement. So this is all about this topic. Now in the next video we will cover the development management. Okay, so that's all for this video. Thank you, bye bye.